Hello and welcome. You are watching Now Streaming on Yahoo India. We have picked some interesting shows for you to watch online. And on today's episode, we have a very special guest who has been nominated for his role in Patal Lok. Who is the special guest? Stay tuned to find out. किस किसने इंडियन मैच मेकिंग देखी थी? सिमी आंटी और उनकी विशेष टिप्पणी की काफी चर्चे हुए एंड वी गॉट एन इनसाइट इनटू हाउ मैच मेकिंग अमंग द इंडियन एलीट वर्क्स. We have a new show called The Big Day streaming on Netflix from February 14th. This show will show us some big fat Indian weddings and also how the multi-million dollar shadi industry works. One of the trademarks of the modern Indian wedding is that they're becoming very personal. Each wedding has a personality of its own. I want to make this wedding everything I've ever dreamed of. I went to the lehenga store, video called him and said, "This is a bridal lehenga I want to wear. Look, I can't have white hair when I'm getting married." Malayalam thriller Drishyam with Mohanlal in the lead was not only remade in Hindi but multiple other languages. स्टोरी की काफी तारीफ हुई और बॉक्स ऑफिस में काफी पैसे भी बने. दृश्यम 2 विल बी स्ट्रीमिंग ऑन Amazon Prime फ्रॉम Feb 19th. क्या ये फिल्म उतनी ही मजेदार होगी जितनी पहले वाली थी? ജോർജ് കുട്ടി അതിവിദഗ്ധമായിട്ട് എല്ലാവരും കണ്ണി പൊടിയിട്ടതാണ്. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും പാതിരാത്രി പശുക്കിടാവിനെ കുറിച്ച് ഇന്നലത്തെ സംഭവം കഴിഞ്ഞതോടെ എന്തോ അപകടം വരാൻ പോകുന്നു എന്നൊരു തോന്നൽ. ഇതുവരെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഇനിയൊന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. 1962 A War in the Hills streams on Disney Hotstar from February 26th, a series on the Indo-China War. अभय देओल है मुख्य अभिनेता और महेश मंजरेकर है निर्देशक. काफी दिनों बाद हम परिणीति चोपड़ा को देखेंगे एक थ्रिलर में. द गर्ल ऑन द ट्रेन will be available on Netflix from February 26th. परिणीति मीरा कपूर का किरदार निभा रही हैं, जिनका हाल ही में डिवोर्स हुआ है. Is मीरा capable of murder? मैं रोज इसी रास्ते से जाती हूँ और उससे मुलाकात होती है. उसे देखकर मुझे मेरा बीता हुआ कल याद आता है. मेरा कोई मोटिव नहीं है मर्डर करने का. हमने आपसे वादा किया था कि आज के शो में हमारे साथ होंगे एक खास मेहमान. He has wowed us with his performances more than once. In Stree, he was Jana, compounder in Mirzapur, and Vishal यानी हथौड़ा त्यागी in Patal Lok. Please welcome Abhishek Banerjee. उस तरह में प्यार है, जब खच की आवाज आती तब लगता है किसी को मारे हैं. Do you think Patal Lok is finally giving you the recognition that you truly deserve? Patal Lok, that step forward, which I was wondering when it will happen and how it will it happen. And it's opened my horizon for sure. It couldn't have been easy to play Hathoda Tyagi. How did you approach this role? It was self-explanatory actually. Like, script was, the way that the role was written, it was completely, it will blow your mind when you read it. And you get goosebumps. और हम सब ने पढ़ा हुआ है, हम सबको पता है कि क्या हुआ था, क्या कौन है वो. So to feel that aura, that was a very interesting part because आपको वो ऑरा भी फील करना है प्लस उसको ह्यूमन रखना है. And my homework was actually reading up about a lot of crime stories. I think I was following up the crime stories which I would usually read and then forget about it कि हाँ यहाँ मर्डर हुआ, दो बुजुर्ग लोग मर गए और या कुछ हो गया, and then you forget that. But then there are in newspapers I realized that there are follow up stories to that. वो लोग उसके बाद बोलते हैं कि वहां पे क्या हुआ,
शायद वो मतलब बेटे के साथ कुछ हो रहा था, and the one who killed was maybe the victim, and then the stories really unfold. So that was my homework. I wanted to understand the human behind the criminal, कि वो criminal होने पहले क्या था, उसकी जिंदगी कैसी थी, and that is how I think I've built Vishal Tyagi, presented in front of the audience and you guys. हथौड़ा त्यागी का जो रोल है, इट काइंड ऑफ गेट्स अंडर योर स्किन, मतलब उनको देख के डर लगता है. How did you actually channelize that? I mean, to play a serial killer and someone who kills as brutally with a hammer, with no other weapon. It's so, and then you have this side who is so kind to dogs, and there's this completely different side to him. I thought there were like two completely very, there was a dichotomy in the role. दो अलग कंप्लीटली अलग लोग जैसे एक इंसान में थे. कभी जब आप you're looking at a dog, तो लगता है इतना नरम इंसान है, और वो जब मारता है तो कोई प्रेपरेशन नहीं. मतलब आप एक सीन है जहां साइकिल में जा रहे हैं एंड यू जस्ट हिट विद द हैमर एंड यू जस्ट जस्ट साइकिल्ड अवे. तो वो थोड़ा बताइए हमें. See, what you see, the relationship between Hathoda Tyagi or Vishal Tyagi and dog is the relationship he shared with the world as a child. Then the world, दुनिया ने उसको basically Hathoda Tyagi बनाया, society ने उसको बनाया, oppression ने उसको बनाया. So he was always that boy. He was always that, like, I mean, show में है भी कि वो थोड़ा सा अलग था. तो maybe उसकी जो वो अलग जिसे कहते हैं, जिसे people can obviously make it a mental disturbance or something like that, but I feel that they also have a very, very pure soul, and that pure soul is what makes him love animal or nature, and he understands that they are pure soul like him. And the Hathoda, the avatar of Hathoda is basically, for him, it's the cleansing of the world. इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो और ऐसे विशाल त्यागी जो बच्चे हैं उन पे अत्याचार करेंगे या उनको ऐसे सिचुएशन में डालेंगे कि वो क्रिमिनल्स बन जाए. So before, he doesn't want anybody else to become a Hathoda Tyagi, and that's why he's cleansing the world. And the day he sees one of his victims, like one of his target, who loves the dog, that's when the confusion starts. उससे पहले कभी विशाल ने अंदर सवाल जवाब नहीं किया. He's never questioned any of his murders before. That's the first time he was like, yeah, but this guy loves dog. So the whole equation is very simple. If you love dog, then you're a good man. So why am I killing a good man? You did this amazing, memorable supporting role in Stree. And now you are this, dreaded killer in Patal Lok. अगर आप जो इतने सारे किरदार आपने निभाए हैं in the past few years, अगर आपके दिल के करीब कौन सा है? As a character, मैं सच बताऊं तो मुझे लगता है कि जना काफी ज्यादा करीब है, क्योंकि उसमें काफी सारी बचपन की यादें हैं उस कैरेक्टर में, और मैंने कहीं ना कहीं अपना बचपन प्ले करने की कोशिश की. मुझे लगता है जना जो है वो डरते थे. भूतों से नहीं, मतलब मैं चीजों से डरता था, मैं कुत्तों से डरता था, तो मैं बहुत सारे, मुझे अंधेरे से डर लगता था. I used to be very scared of darkness. So all of that I tried to get back, and so I felt very connected to myself after that film. So that has been a very nice, sweet journey. And Hathoda Tyagi is that memory of, जिसे कहते हैं कि it's always going to be the memory which has given me this entire transition in my life. इसलिए, और इस तरह के कैरेक्टर्स, हथौड़ा त्यागी जैसे कैरेक्टर या कंपाउंडर या टाइपराइटर में, जो मुझे इन कैरेक्टर्स को करने में ज्यादा मजा आता है, उन कैरेक्टर्स को फील करने में, मतलब जना जैसे कैरेक्टर को फील करने में ज्यादा मजा आता है, और इन कैरेक्टर्स को परफॉर्म करने में ज्यादा मजा आता है. टू मेक बिलीव, जैसे आपने बोला कि यार बड़ा डर लगता है एंड ऑल दैट, तो ये मुझे बड़ा मजा आता है कि ओ मैंने डरा दिया. दिस इज द नाइस सैटिस्फैक्शन आई keep with me when I'm playing these characters. So, from the bit role that you did the first time you were on screen in Rang De Basanti, I don't know, maybe too many people don't know about that you were auditioning for one of the roles, and that was the bit role that you did. Or now all the recognition that you're getting for the different roles, Mirzapur mein ho, Stree mein ho, ya Patal Lok mein ho. If you had to define this journey,
how would you define it? Oh, highly passionate and a very happy journey. And it's still that. It's still like every day I wake up and I want to go to work. I want to work. I want to be part of films in whatever capacity I can be. And it's like a big long holiday. And उस टाइम भी holiday था. उस टाइम भी मैं ऐसा नहीं. I'm not saying that मैं उस टाइम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं डरा हुआ था या डर लग रहा था कि क्या होगा नहीं होगा एंड स्टफ लाइक दैट बट वो डर बीच बीच में आया भी शक अपने ऊपर आया शक इंडस्ट्री के ऊपर आया पर वो धीरे धीरे वो क्लियर होता गया अपने काम से so I feel that it has been a very productive few years I mean many years of my life actually. You work closely with so many people like Rajkumar, Jaideep, you know, a lot of people you have worked with. So if you had to pick a favorite, who would that be? I think you took both the names. Jaideep and आपने दोनों Rajkumar? का नाम ले लिया. अच्छा. Yes, yes, yes. आई थिंक दे वेरी स्पेशल बहुत ज्यादा स्पेशल है और इसलिए नहीं कि मैंने उनके साथ काम किया है मैं उनकी एक्टिंग का जनरली फैन और मैंने राज को स्त्री से नहीं उससे पहले से जानता हूँ एंड आई हैव बीन व्हेन आई सॉ ट्रैप्ड आई मैसेज्ड हिम व्हेन आई सॉ शाहिद आई मैसेज्ड हिम जेरी के साथ भी सेम वैसा ही रिश्ता है जेरी भी ऑलमोस्ट थोड़े से सीनियर लगते हैं मुझे तो मुझे मैं उनको बड़े भाई की तरह देखता हूँ एंड ही इज अगेन अ फैंटास्टिक एक्टर and when you act with these actors you start becoming you start looking good in front of them and you also learn so much from them that you can also use that same artillery next time when you're acting. You're wanting to become an actor, like, you know, I guess you come from Kharagpur is what I have read. Kharagpur. And you know, Yeah. most Bengali families, I come from a Bengali family, the first thing is you become either a doctor Oh. or an engineer. Yeah, I've grown up in Calcutta Yeah, all my yeah. life, and you become a Oh, doctor. okay. So how, at what point did you know that acting was going to be what you would do? And you, like, did you have to put your foot down and say that ma baba ar kichu korbo na, ami acting hi korbo? Or was it a very easy process, seamless process? No, it was a very tough one, as you said, that Bengali families, if you are not, a PhD, then you are not respected. तो इंजीनियर भी मतलब नीचे ही होते हैं हाँ इंजीनियरिंग की तो की है इसमें क्या हो गया वो पर बीच में मीम चल मतलब रहा था नहीं ना यार आई मीन कि आई हैड अ टफ कमला टाइम हैरिस को किसी ने पूछा कि वाइस प्रेसिडेंट बन रही है, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, बंगाली पेरेंट्स विल से कैन नो वाइस प्रेसिडेंट, व्हाई नॉट प्रेसिडेंट? So there was I know exactly. So the Bengal Bong parents are never happy. This is for the entire nation. हम लोगों को बहुत झेलना दबाव का पड़ता सामना है. करता But yeah, and I think yeah. I think they love us unconditionally, and they love us a little lot more than I think anybody expects or anticipates. So my dad, he तो hated the idea of me wanting to act because वो होता ना कि हीरो बनेगा तू हीरो बनेगा शक्ल देखिए हीरो बनेगा and all that so it starts from home the doubts the questions doesn't start from the so that's what like first you need to fight your closed ones when you are wanting to become an artist because the society दुनिया तो बाद में देखेगी और वो जो देखेगी वो देखेगी लेकिन आपके खुद के घर वाले जो हैं वो बहुत टाइम लेते हैं समझने में कि ये हो क्या रहा है लड़का. So I had a tough time because my dad obviously wanted me to become an engineer, and then I chose English honors in college, and I didn't give my exams. In school, I was not doing so well in my science classes, and one teacher once she basically said it sarcastically, but I took it very seriously. She said कि तू यही करना because I was getting on a stage. मैं stage पे बहुत ज्यादा था स्कूल में और मैं डिबेट या किसी ऐसी चीज के लिए शायद चढ़ रहा था स्टेज पे और टीचर ने पीछे से ताना मारा कि तू यही कर तू इसी में अच्छा है. And that time I had seen Laksh, and Laksh में there was a scene where Boman Irani tells Hrithik Roshan कि घास काटो पर अच्छे से काटो. And I don't know why magically both the things connected. And I was like यार ये मैम सही करी है. And after that day I told myself कि अब तो तू एक्टिंग ही करेगा तुझे एक्टिंग मजा आता है तू स्किट्स करता है ये करता है. I saw Chak De India के auditions in Delhi. I went there to just see कि what's happening around like Shahrukh Khan की फिल्में and all of that. And that day I realized कि यार यही करना है. Like I can't think of anything else but this.
So you So talked about this moment of self-doubt that is there, it starts yeah, it starts at home. And, yeah, OTT platforms have opened up this new, entire platform where all kinds of actors are welcome. But when you started off, I mean, say, Rang De Basanti, though these platforms were not really available, did you of ever course. have a moment of self-doubt saying that, can I really make it? I mean, do I have it in me? Was it ever there? Yeah, yeah. I mean, I thought of starting my career at 40. So I had given up. That's why I started my casting company with Anmol, and we went deep into casting and everything like that. Because I thought कि यार काम तो नहीं मिलेगा, अच्छा एक्टर तो हूँ नहीं. अब अच्छा एक्टर नहीं हूँ तो मतलब मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. वो ट्रेनिंग लेने के लिए इतना तो पता है क्योंकि मैंने पहले ट्रेनिंग ली हुई थी कि यार वो ट्रेनिंग 1-2 महीने के क्लासेस में नहीं होता है, या वो 6 महीने के थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने से नहीं होता, वो सालों साल की मेहनत. So I knew that I have to now work hard towards becoming a good actor. But किस्मत ने साथ दिया. एंड शायद मीडियोक्रेसी में ही मुझे काम मिल गया. और अब उस मीडियोक्रेसी में धीरे 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 अपने आप को आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ एज गुड एज द एक्टर्स हु इंस्पायर मी, थैंकफुली ओटीटी की वजह से ये मौका मिला. और पेरेंट्स को, जैसे मैं अगेन फर्स्ट, वो पेरेंट्स को नहीं समझ में आता, बिकॉज व्हेन यू आर डूइंग बिट पार्ट्स एंड दिस एंड दैट, हाँ लड़का जाके एक सीन का रोल करके आ रहा है, ये हो रहा है. कास्टिंग कास्टिंग क्या होती है, क्या होता है कास्टिंग में, हीरो हीरोइन तो कोई, so there are too many questions, and suddenly when you are somebody who people love and they go and tell your family ki are dada apnar chele to eta korche, apnar chele to okhane jacche. So it's not them who see it first. It's the society, the neighbors, the And then they people, start relatives, and that's changing their when. perspective. And then then they're like, oh wait, our son is doing something. So it's very interesting. Ye sari cheeze hai. And that's what I'm saying. It's a nice journey. So my final question to you, Abhishek, what's in store for your fans? What can we expect next from you? Some memorable performances in 2020, and now what can we look forward to? Well, it's actually what's happened is that every time I thought that this is my stronghold, I have got something completely different. तो इस साल क्या हो रहा है कि बहुत सारे मिक्सचर्स आने वाले हैं कैरेक्टर्स के. मैं बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स कर रहा हूँ. आई स्टैमर समवेयर, आई एम a loser somewhere, I am a romantic somewhere, I am a dhobi somewhere, I'm a lawyer somewhere. So I am being really a wide variety of characters this year. 2021 is really a year where I have experimented a lot. So now I am very, very nervous about this year. Because I know till previous year, अच्छा ये कर सकता था, अब तो हथौड़ा चाहिए कर लिया, और ये तो सही है. And now what's going to happen is that, okay, ये तो acting कर सकता है, so he's a good actor. So now every performance of yours is going to be like Yeah, it's still scrutinized and measured. Yeah. yeah, exactly. So I'm worried about that, but at the same time I'm very happy that I'm going to surprise everybody, क्योंकि मुझे पता है कि nobody is expecting the characters which I'm doing in my future outcome. Like जो भी projects आ रहे हैं, films, anthologies and web shows, they're all different from each other, and so we keep blaming Bollywood, we keep blaming the Hindi film industry for typecasting. Thankfully मुझे बिल्कुल नहीं किया है, मुझे एकदम टाइपकास्ट नहीं किया. So I'm very happy about that. So what is the one word that you would say to your fellow nominees for the Critics' Choice Awards? Arey, I'm so happy and proud of all of them, because I know most of them. I know Chandan Roy Sanyal from a long time. I know Ishwak. Chandan Roy and Ishwak were also cast by my company. So I'm happy because कि मतलब होता है कि अच्छा, मतलब ये अपने ही जहाँ से हमारे ऑफिस से निकले हैं, they have also got their nominations and everything, and so glad. And I just want to tell you that win, lose, I don't know, but all of you are really worthy of an award. You guys are all special. Thanks for your time, Abhishek. I am rooting for Hathoda Tyagi, so all the best. Thank you so much. Thank you so much. Thank you for your time. Take care, Romana. उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया, और हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि और कौन से कलाकार को आप देखना चाहेंगे हमारे शो पर. लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
Please don't forget to like, share and comment on this video.